Welcome students. In today's session, we are taking the topic osmosis and osmotic pressure. Students, this one is the last colligative property. So at earlier, we have learnt about first of all vapor pressure, then second one is boiling point, then third one is freezing point, and the last one is osmosis and osmotic pressure. See, here in one beaker we have filled both of the sides water, here also water, and at middle we are taking semi permeable membrane. This one is semi permeable membrane. This membrane allows only solvent molecules. अब क्वेश्चन, ऐसे मेम्ब्रेन मिलेगी कहाँ और बनेगी कैसे? So first of all, the best semi-permeable membrane is K4FeCN6, potassium hexacyanoferrate, okay, or potassium ferrocyanide. Second one is urinary bladder, then roots, surface of roots, even our skin also, it is semi-permeable membrane, but its work function is quite different. Okay, so this one is K4FeCN6 here, which is generally used. It is the best semi-permeable membrane which allows only the solvent molecules. Cellophane, parchment paper, etc. are the semi-permeable membranes. Urinary bladder of only one animal, that is of frog. It is used as a SPM. Okay, तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे बीच में रख दी है. At one side water is taken, another side also water is taken, but at initial level, and then after here we are adding some solute particles like urea or glucose. Okay, then what happens? So here we are getting the solution, means this part contains the solute particles, means now here solution. तो अब हम definition कैसे बोलेंगे कि if water and the solution which is prepared from water is separated by semi-permeable membrane, then spontaneous flow of, spontaneous means occurring on its own, spontaneous flow of solvent molecules is obtained from water to solution, from water to solution. So spontaneous flow is obtained from water to solution, and this phenomenon is known as osmosis. So what is meant by osmosis? Osmosis is a phenomenon in which a spontaneous flow of solvent molecule is obtained when water and the solution which is prepared for water are separated by SPM. SPM means semi-permeable membrane. Okay, तो जैसे ही वो membrane में से हम पास करेंगे तब क्या होगा कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है? तो हमें यहाँ पे flow मिलता है किसका? Solvent molecules का. From where to where? So from water to solution, from water to solution. So we are getting a spontaneous flow of the solvent molecules, and it is called osmosis. Okay, so this is a spontaneous flow of solvent molecules. Okay, and now what is meant by osmotic pressure? So this osmotic pressure means it's a mechanical pressure which is applied to
स्टॉप द ऑस्मोसिस, अगर हमें ऑस्मोसिस स्टॉप करना होगा तो हमें यहाँ पे किसी एक जगह पे प्रेशर लगाना होगा। अब ध्यान से देखा, एट विच साइड वी हैव टू अप्लाई द प्रेशर। चलो हम प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई प्रेशर टू द बोथ ऑफ द साइड्स। तो अगर हमने प्रेशर यहाँ पे अप्लाई, देखो फ्लो कहाँ से कहाँ है, फ्लो यहाँ से यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, तो जैसे हमने प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा ऑस्मोसिस होगा। हियर वी वांट टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, so that we have to apply a pressure at solution side, so that this solvent molecules, the flow of solvent molecules can be stopped। तो अगर हम प्रेशर यहाँ पे लगाएंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ट्रैवल नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई द pressure which is generated, which is applied to stop the osmosis when water and the solution is separated by SPM. So at that time, if we want to stop the osmosis process, so this one is known as osmotic pressure। उसका सिंबल है पाई, और ये जो पाई है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। चलो कंसंट्रेशन जनरली हम लेंगे मोलारिटी यूनिट में। दैट्स व्हाई पाई is directly proportional to number of moles upon volume in liter। okay, so pi, चलो n number of moles suppose 1 है तो pi is inversely proportional to v। okay, next pi is directly proportional to temperature, and the third one is pi is directly proportional to the solute particles। और तीनों को हम कंबाइन करते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे आएगा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। हमने कलेक्टिव फॉर्म में ये लिखा है तीनों, और प्रोपोर्शन की साइन हम जैसे ही हटाएंगे तो वैसे क्या होगा, nRT by v। दैट्स व्हाई हियर वी कैन से पाई v इक्वल्स nRT, पाई v इक्वल्स nRT। अब आपको कुछ इक्वेशन याद आया होगा, पाई की जगह हम p लिखे तो ये क्या हुआ, pv इक्वल्स nRT, याद करो। सो PV इक्वल्स nRT इज आइडियल गैस इक्वेशन, और वो इक्वेशन PV इक्वल्स nRT आइडियल गैस इक्वेशन उसके जैसा ही है ना। दैट्स व्हाई हियर पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। वो कौन सा लॉ हुआ, P इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो याद हो तो वो बॉयल्स लॉ हुआ। तो इसको हम बोलेंगे, तो ये वॉन्टॉफ ने तीनों रिलेशंस फाइंड आउट किए थे। दैट्स व्हाई वॉन्टॉफ तो वर्ड है ही, लेकिन यूज किया था बॉयल्स लॉ। So first is Boyle-Van't-Hoff law। Second one is pi is directly proportional to T. It is Gay-Lussac-Van't-Hoff। And third one is pi is directly proportional to N. It is Avogadro-Van't-Hoff। okay, तो फर्स्ट वन इज Boyle-Van't-Hoff, सेकेंड वन इज Gay-Lussac-Van't-Hoff, एंड थर्ड वन इज Avogadro-Van't-Hoff। तो ये तीनों लॉ कंबाइन होके हमें इक्वेशन मिला है पाई इक्वल्स nRT। सो जनरली दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल्स। इट इज पाई v इक्वल्स nRT, okay, where pi is osmotic pressure। okay, it is generally in atmosphere unit और bar unit। अगर एटमोस्फियर यूनिट में है तो फिर R की वैल्यू हम लेंगे 0.082 लीटर एटमोस्फियर पर मोल पर केल्विन, और अगर बार में है तो फिर हम R की वैल्यू लेंगे, R पता है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो बार में उसकी वैल्यू हम लेंगे 0.08314 लीटर बार पर मोल per Kelvin। okay, what is N? N means number of moles of solute।
that can be written W2 by M2, 2 for solute, याद होगा. T, it is absolute temperature and its units must be in Kelvin. And V वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि पता होगा आपको यूनिट लीटर लिखते हैं, देखो हम दोनों जगह पे. ओके, चलो V को नीचे भेजते हैं तो क्या होगा, पाई इक्वल्स N बाई V आर टी. N बाई इज C कंसंट्रेशन, so C must be in molarity unit. That's it. अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे. तो ये है अपना ऑस्मोसिस और पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर. So again, osmotic pressure is applied to stop the osmosis. Yes, students. So now, textbook reading. Osmosis and the osmotic pressure. There are many phenomena which we observe in nature or at home. For example, the raw mangoes shrivel when pickled in a brine, salty water. Wilted flowers revive when placed in a fresh water. Blood cells collapse when suspended in the saline water. If we look into those processes, we find one thing common in all, and that is that all these substances are bound by membranes. These membranes can be animal, vegetable origin, and these occur naturally, such as pig's bladder or the parchment, or can be synthetic, such as a cellophane. So these membranes appear to be continuous sheets or films, yet they contain a network of submicroscopic holes or pores. मतलब ये जो मेम्ब्रेन होती है उसमें माइक्रोस्कोपिक होल्स मतलब पोर्स होते हैं. And small solvent molecules like water can pass through these holes, but the passage of the bigger molecules like solute is hindered. ओके, तो वहां पे रेजिस्ट करेंगे, वो पास नहीं करने देंगे. सो मेम्ब्रेन्स हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स. सेमी परमिएबल मतलब हर एक को वो परमिशेबल परमिट नहीं करता. सेमी परमिएबल मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को ही वो अलाउ करेगा. ओके, एंड दैट इज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. So assume that only solvent molecules can pass through these semi-permeable membranes, and if this membrane is placed between the solvent and solution, as shown in figure 2.9, अब next आगे आएगा अभी figure में, solvent molecules will flow through the membrane from pure solvent to the solution, and this process of flow of solvent is known as osmosis. Okay, and the flow will continue till the equilibrium is attained, and the flow of the solvent molecules from its side to the solution side across a semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied, and this pressure that just stops the flow of solvent is known as osmotic pressure of the solution. Okay, and the flow of solvent from dilute solution to the concentrated solution across the SPM is due to the osmosis. And the important point to be kept in this mind that the solvent molecules always flow from lower to higher concentration. चलो इतना आपको भी याद रखना है. तो पहले तो SPM उन्होंने एक्सप्लेन किया, व्हाट इज मीन्ड बाय SPM, वो कैसे किसको अलाउ करेगा. फिर ऑस्मोसिस उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. ओके, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सप्लेन किया. तो ऑस्मोटिक प्रेशर हैज बीन फाउंड टू डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. जितना कंसंट्रेशन ज्यादा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा. तो अब देख लो, ये दिस वन इज अवर SPM. दोनों जगह पे प्रेशर तो लगता ही है, लेकिन एक जगह पे हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा बिकॉज हियर सॉल्यूशन इज गिवन, हियर सॉल्वेंट इज गिवन. सो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर. सो आंसर इज फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. तो देखो यहां पे ये पास होंगे कहां से कहां, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन.
Okay, so the osmotic pressure of the solution is the excess pressure that must be applied to a solution to prevent the osmosis and to stop the passage of the solvent molecules through the SPM into the solution, and this is illustrated in given figure. Okay, so osmotic pressure is a colligative property as it depends upon the number of solute molecules and not on their identity. मतलब वो depend किसके ऊपर करता है? Solute molecules के ऊपर depend करेगा. It has been found experimentally that osmotic pressure is proportional to the molarity C and the given temperature T. So pi equals CRT, where C is the concentration, so it is N2 by V. N2 means number of moles, that is mass of solute upon molecular mass of solute. So W2 and M2 is written. So finally pi V equals W2 RT by M2 is formed. Okay, and thus knowing the quantities W2, T, pi and V, molecular mass can be calculated. Easy? Next. चलो अब ध्यान से देखो यहाँ पे. The measurement of the osmotic pressure provides the another method of the determining the molecular mass of solute, and this method is widely used to determine the molecular masses of the proteins, polymers and the other macromolecules. The osmotic pressure method has been advantageous over the other methods as the pressure measurement is around the room temperature and the molarity of the solution is used instead of molality. As compared to the other colligative properties, its magnitude is large even for the very dilute solution also. मतलब dilute solution हो फिर भी उसका molecular mass आपको मिल जाएगा. And the technique of the osmotic pressure for the determination of the molecular mass of the solid is particularly useful for the biomolecules as they are generally not stable at high temperature. That's why जब temperature increase होता है तब जो elevation in boiling point वो वाली method हम use नहीं कर पाते हैं properly. Okay? और polymers का molecular mass अगर find out करना है तो फिर उसके लिए वो use होगा. So they are generally not stable at high temperature and the polymers have the poor solubility. Okay? Now अब आगे देखते हैं two solutions. अब यहाँ पे बारी आती है isotonic solution की. आइसोटोनिक सॉल्यूशन दूसरा वर्ड है आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन. तो जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो such solution are known as isotonic solution. तो अब मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ध्यान से देखना. सो नाउ आई एम राइटिंग characteristics of isotonic solutions. चलो इनकी characteristics क्या है. Number 1, osmotic pressures are same. Second one is vapor pressure of both of the solutions are same. Third and most important thing, number of solute particles are same. Next one is, so first one is osmotic pressure, vapor pressure, number of solute particles and the molar concentration. Concentration का कौन सा यूनिट? Only one and thing, molarity. So molar concentration of solute particles are also same. And the last and final characteristic, when such solutions are separated by SPM, अगर SPM थ्रू हम दोनों सॉल्यूशंस को अगर हम सेपरेट करते हैं तो हमें याद रखना है यहाँ पे कि नो ऑस्मोसिस विल अकर. क्यों? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है? सेम है.
दैट्स व्हाई. सो एट दैट टाइम ऑस्मोसिस नहीं होगा यहाँ पे. चलो, इसका मोस्ट 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 बेसिक कंसेप्ट कहां पे यूज होगा पता है? चलो, तो हमें पता है, अभी मैंने बताया कि the fluid inside the blood cell is equivalent to that of 0.9% mass by volume, means W by V NaCl solution. तो मोस्ट बेसिक क्यों है पता है? क्योंकि ये जो ब्लड सेल होते हैं, ब्लड सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है दैट इज आइसोटोनिक विद द 0.9% W by V NaCl solution. तो जनरली जब भी कोई भी पर्सन जब एडमिट होता है तो उसको पहले सेलाइन वाटर, यही 0.9% W by V, यही बोतल उसको चढ़ाई जाती है पहले, जिससे क्या होता है ब्लड सेल कंपेटिबल हो जाते हैं उसके साथ. ओके, वरना क्या होगा, अगर हम पानी में ब्लड सेल डालेंगे तो फिर क्या होगा पता है? तो बाहर प्योर वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट और अंदर फ्लूइड, जिससे क्या होगा दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट होगा. तो फ्रॉम लोअर टू हायर, तो पानी अंदर जाएगा, जिससे क्या होगा ब्लड सेल बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे. ओके, अगर हमने ज्यादा कंसंट्रेशन गलती से रख दिया, 0.9% W by V से ज्यादा अगर हमने रख दिया, तो फिर क्या होगा, वो श्रिंक कोलैप्स हो जाएगा, अंदर से वो फ्लूइड बाहर आ जाएगा. ओके, जिससे वो कोलैप्स हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे. ओके, सो ये जो नॉर्मल सेलाइन वाटर सोल्यूशन है दैट इज 0.9% W by V and it is safe to inject the intravenously. Okay, so on the other hand, if we place the cells in the solution containing more than 0.9%, इससे क्या होगा, water will flow out of the cell and they will shrink, and such a solution is called hypertonic. अगर ज्यादा concentration रखा तो, if the salt concentration is less than 0.9%, that is pure water, या तो फिर 0.9% से अगर हमने कम concentration रखा, so the solution is said to be hypotonic, मतलब ज्यादा concentration तो हाइपरटोनिक, लोअर कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक, और सेम कंसंट्रेशन देन आइसोटोनिक. तो तीन हुए ना, आइसो देन हाइपर देन हाइपो. सो इन दिस केस वाटर विल फ्लो इन into the cells if placed in the solution and they will swell. ओके, वो फूल जाएंगे और फिर फट जाएंगे बस. ओके, so the phenomena mentioned in the beginning of this section can be explained on the basis of osmosis. A raw mango placed in the concentrated salt solution then loses water via osmosis and shrivel into the pickle. पता है ना, pickle ऐसा ही बनता है. Wilted flowers revived when placed in the fresh water. A carrot that has become limp because of water loss, okay, into the atmosphere can be placed into the water, making it firm once again. Okay, water will move into the cells through the osmosis when placed in water containing less than 0.9% W by V. Blood cells swell due to the flow of water in them by osmosis, and the people taking a lot of salt or salty food experience water retention in the tissue cells and the intercellular spaces because of osmosis. The resulting puffiness of the swelling is called edema. इसको हम बोलेंगे edema. And the water movement from the soil into the plant roots and the subsequently into the upper portion of the plant is particularly due to osmosis. The prevention of the meat by salting and the fruits by the adding sugar protects against the bacterial action. And through the process of osmosis, the bacterium or salted meat or candied fruit loses the water and shrivels and dies. Okay, चलो, तो ये एडेमा आपको याद रखना है. आगे हमने याद हो तो एक टॉपिक किया था जिसका नाम था बैंड्स. ओके, बस ये सब वर्ड, उसका मीनिंग सब आपको लर्न करना है प्रॉपर्ली. ओके, तो इसी के साथ ऑस्मोसिस थियरी यहाँ पे कंप्लीट हुई. हाँ, सो
Next point is the reverse osmosis and the water purification. तो अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक में ध्यान रखो, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब जनरली हम ऑस्मोसिस का लॉजिक क्या है कि जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस हमें स्टॉप करनी हो, सो एट दैट टाइम रिक्वायर्ड प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. बट हियर वी वांट टू apply the phenomenon osmosis, and that's why applying pressure, that's why it is known as reverse osmosis. So again reverse osmosis मतलब हमें यहाँ पे osmosis करना है, that's why we are applying the pressure. Okay, so the direction of osmosis can be reversed if a pressure larger than the osmotic pressure and it is applied to the solution side. That is, now the pure solvent will flows out of the solution through this SPM, and this phenomenon is known as reverse osmosis. मतलब यहाँ पे salty water देख लो, and here with piston, by piston we are applying the pressure. Okay, हम यहाँ पे pressure apply कर रहे हैं this side से, जिससे क्या होगा, ये जो सॉल्ट वाटर है, ये जो SPM हमने यहाँ पे रखा है, SPM दिख रहा है ना, इससे क्या होगा कि वो सिर्फ वाटर को ही पास होने देगा SPM, जिससे क्या होगा, यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर मिलेगा. तो घर पे जो RO हम बोलते हैं, RO दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस. तो जो RO हम बोलते हैं ना, ये सेम उसी का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस. ओके, सो रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड in the desalination of the sea water. सी वाटर में से अगर कैसे आपको प्योर वाटर चाहिए तो इस मेथड से आपको मिलेगा. ओके, तो schematic setup is given here. Now when pressure more than osmotic pressure is applied, then pure water is squeezed out of the sea water through the membrane, and a variety of the polymer membranes are available for this purpose. तो अभी मैंने बताया ना कौन सा, जो polymer membrane, that is a K4FeC and 6, अभी मैंने बताया था वही. The pressure required for the reverse osmosis is quite high. So the workable porous membrane is the film of the cellulose acetate placed over the suitable support. And the cellulose acetate is permeable to the water, but the impermeable to the impurities, ions present in the seawater. So these days, many countries use the desalination plants to meet their potable water requirements. ओके, तो ये हुई अपनी 2 मार्कर थियोरी, नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन. तो विथ फिगर आपको ये लर्न करना होगा. नाउ वन न्यूमेरिकल, चलो एक फॉर्मेलिटी हम कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे. एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर मीन्स 1 लीटर सोल्यूशन हैज द ऑस्मोटिक प्रेशर हाउ मच, 4.98 बार. तो अब ध्यान रखो, यहाँ पे 36 ग्राम of glucose is taken. You are asked, so if the osmotic pressure is 1.52 bar, then at same temperature, then what would be the concentration? तो पहले हम क्या करेंगे, हम एक concentration find out कर देते हैं. 36 ग्राम of glucose and 1 liter solution. चलो इसका concentration क्या है, C1 का, it is mass by molecular mass. ग्लूकोज का मोलिकुलर मास है 180 and 1 liter solution. 36 9 4s and 9 2s 20 4 5s. It is 1 by 5, that is 0.2 molar. Okay, we know that pi is directly proportional to C. तो इसका मतलब ये होगा pi1 upon pi2 इक्वल C1 upon C2. चलो इनिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 4.98. एट दैट टाइम कंसंट्रेशन कितना, 0.2. अब आपको क्या पूछा है, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर इज 1.52, देन हाउ मच C2 इज देयर. सो C2 इक्वल्स 0.2 into 1.52 divided by 4.98.
ओके, सो यहाँ पे होगा 0.2 multiplied by 1.52 divided by 4.98. That's it. So 0.061 मोलर। तो ये हुआ अपना C2। ओके, ये हुआ अपना C2। मतलब जब प्रेशर होगा 1.52 बार, एट दैट टाइम द मोलारिटी इज 0.061। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, फिर आई टर्म, ओके, उसके लिए जो दो फिनोमिनन है, तो वो दो फिनोमिनन यहाँ पे यूज हो, उसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके स्टूडेंट्स, चलो देन, गुड बाय।